So yesterday I told you the static concept. So whenever we use the word static, always remember static means related to the class. Static means what? Related to the class. Static means related to the class. Okay. तो अभी हमें क्या करना है? First of all, I will tell you the concept of the function overloading in Java. I will tell you concept of function overloading in Java. Okay. कल हम लोगों ने नोटपैड पे देखा था कोड, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इक्लिप्स के अंदर. So we'll continue the code in Eclipse now. ठीक है? So first of all, I'll tell you the concept of function overloading in Java. File new project here. File new project here, and function overloading. Function overloading. Click finish here. Okay. So function overloading, देखो right click on a project, new, create a class here. Function overloading mean, देखो कि function overloading मतलब क्या? If you remember in C++, अगर तुम्हारे पास कोई क्लास है, ठीक है, एग्जाम्पल एरिया नाम का है ना, एरिया नाम का एक क्लास है, तो इस क्लास inside of this class public void circle area is the method where we are going to pass a radius. Similarly, public void triangle area float base and a float height. तो होता क्या है, float circle area equal to 3.14 f for a float into r, and here area of a circle is plus area of circle is plus CA. Similarly, float CA is equal to 0.5 f into b into h. That's why so area of a triangle is परसेंट, यहाँ पे आएगा प्लस CA, यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल. रिमेंबर दिस. तो अभी क्या करना है हमें एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए? लिसन केयरफुली. तो ये एरिया ऑफ सर्कल जो है, ये नाम अलग है, ये नाम अलग है. राइट नाउ वी हैव डिफरेंट नेम्स हियर. वन मेथड इज फॉर सर्कल एरिया, वन मेथड इज फॉर ट्रायंगल एरिया. बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू डिफरेंट नेम्स, what function overloading is here, you can use single name like calculate area. You can use only one name, that is called as a calculate area. Calculate the area. You can use only one name, which is called as calculate area. No need to use two different names. No need to use two different names. F stands for a float here. अगर F नहीं दिया तो error आएगा. क्यों? क्योंकि ये होता है फ्लोट और ये हो गया डबल, एंड डबल का जो साइज होता है वो फ्लोट से डबल होता है. एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग द एफ हियर, तो द हायर डेटा टाइप यू आर स्टोरिंग इनसाइड अ लोअर टाइप, तो तुम्हें टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा यहाँ पे फ्लोट में. रूपेश, दिस इज क्लियर? तुम्हें यहाँ पे इस डेटा को टाइप कास्ट करना पड़ेगा. क्लियर? इनसाइड अ फ्लोट. ठीक है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू फ्लोट. ठीक है, तो अगर ऐसे नहीं लिखना है तो तुम एक काम करो, यहाँ पे f दे दो, दैट्स इट. ओके, तो ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल. द फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ सर्कल, सेकेंड वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो ये हो गया तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, जो कि C++ में भी था. तो बाकी यहाँ पे कुछ नया है, अभी बताता हूं मैं. बट फंक्शन ओवरलोडिंग, देखो हमारे पास C++ में पॉलीमॉर्फिज्म था.
पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का था, एक था स्टैटिक polymorphism and second is dynamic polymorphism. ठीक है, तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक के अंदर C++ में होता था दो चीजें, एक था फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा होता था ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बट अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास दो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है। इन जावा में देयर इज नो ऑपरेटर ओवरलोडिंग। डायनेमिक यहाँ पे आएगा विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, ये हम बाद में देखेंगे। तो फंक्शन ओवरलोडिंग है, फंक्शन ओवरलोडिंग के आगे यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है वेयर आर्ग्स। वो क्या होता है मैं बताता हूँ, रुको। तो फंक्शन ओवरलोडिंग ने क्या बोला कि यू कैन यूज सेम फंक्शन नेम मोर देन वंस फॉर डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, बट सेम फंक्शन वी कैन यूज मोर देन वंस for the different implementation. Okay, implementation. Okay, but function signature must be different and function signature are पहला होता है type of parameters, टाइप ऑफ पैरामीटर्स मतलब void display integer and void display float comma float. Second one is number of parameters, void display integer comma integer. And the third one is sequence of parameters. तो थर्ड वाला कौन सा होता है, void display integer comma float and second display float comma integer. तो ये तीन होते हैं। एक होता है टाइप ऑफ पैरामीटर, अगर एक डिस्प्ले मेथड तुम दो बार यूज कर रहे हो तो एक बार दो इंटीजर है तो दूसरी बार फ्लोट लिखो। नंबर ऑफ पैरामीटर में यहाँ पे एक इंटीजर है, यहाँ पे दो इंटीजर है। सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर इंट फ्लोट है, फ्लोट इंट है। इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आइदर यू शुड हैव द टाइप शुड बी अ डिफरेंट, नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी अ डिफरेंट एंड सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर शुड बी अ डिफरेंट। इनमें से एक क्राइटेरिया यहाँ पे मैच होना चाहिए, तभी हम लोग इसको बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। तभी हम इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग। दिस इज क्लियर, प्लीज रिप्लाई एवरीवन। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे नोट, सपोज इफ यू हैव अ फ्लोट डिस्प्ले इंटीजर एंड इंटीजर डिस्प्ले इंटीजर, so this is not the function overloading, this is not the function overloading, क्योंकि the reason is that फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो कॉल होता है वो आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे कॉल होता है। रिटर्न टाइप तो सबसे आखिरी में होता है। अगर तुम किसी फंक्शन को कॉल करोगे, सपोज इफ आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास एरिया ए इज इक्वल टू न्यू एरिया एंड ए डॉट, एक सेकेंड, हाँ तो सुनो क्या बोला मैंने यहाँ पे कि कोई भी फंक्शन अगर कॉल होता है तो अगर ऑब्जेक्ट कर लिया यहाँ पे ए डॉट कैलकुलेट एरिया किया मैंने और 2.2, 3.3 पास कर दिया, एफ मतलब फ्लोट। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो व्हेन यू आर लाइक कॉलिंग पासिंग द टू आर्ग्यूमेंट्स, तो ये कॉल करेगा इसको। कोई भी फंक्शन आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे ही कॉल होता है। अगर तुमने कॉल किया a डॉट कैलकुलेट एरिया एंड इफ यू पास 2.5 f, so this function will invoke the first one, depends on the argument. So if you have two argument, call the second one. If you have only one argument, call the first one. So always you remember that function signature consists of only the type of parameter
number of parameter and sequence of parameter. Return type is not a part of function signature. Return type, you can write down here, return type is not a part of function signature. Return type is not a part of function signature. जर void display int आणि void display int float असेल तर चालेल ना, मग तरी पण चालेल, कारण की इथे तुझ्याकडे इकडे एकच आर्ग्युमेंट आहे, इथे दोन आर्ग्युमेंट आहे. स्फूर्ती, इथे एकच आर्ग्युमेंट आहे, इथे दोन आर्ग्युमेंट आहे, हे व्हॅलिड आहे. ठीक आहे. तर महत्वाचं काय इकडे स्फूर्ती, की आपल्याकडे इथे जो डेटा आहे ना, तो या दोघांमध्ये तुम्ही 2 काय 4 पण लिहू शकता. हे बघा, तर तुम्ही कॅल्क्युलेशन लिहिलं, एक इंटिजर आहे, कॅल्क्युलेशन लिहिलं, एकात फ्लोट लिहिलं, कॅल्क्युलेशन लिहिलं, एकात कॅरेक्टर लिहिलंय. ओके, कॅल्क्युलेशन लिहिलं, एकामध्ये तुम्ही इंट कॉमा इंट लिहिलं, कॅर लिहिलं, एकात इंट कॉमा फ्लोट केलं, तरी पण हे सगळं व्हॅलिड आहे. काहीतरी चेंज आहे की नाही आर्ग्युमेंट मध्ये? टेल मी. There is some change in the argument, yes or no? In every function there is some change, right? So this is function overloading. This is called as a function overloading. Clear? Okay. तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओव्हरलोडिंग, की फंक्शन सिग्नेचर मस्ट बी डिफरंट. आता फंक्शन सिग्नेचर मध्ये काय काय येणार? त्याच्यात पॅरामीटर येणार, त्याच्यामध्ये टाइप ऑफ पॅरामीटर असणार आहे. इथे इंट आहे, इथे फ्लोट आहे, इथे नंबर ऑफ पॅरामीटर आहे, एक इंट आणि दोन इंट, इथे सिक्वेन्स ऑफ पॅरामीटर. म्हणजे either there should be a number of parameters, type of parameters, sequence of parameter must be different. ठीक है, number of parameters, sequence of parameter and okay, number of parameters, sequence of parameter and type of parameter must be different. ठीक है. Okay, so let's go to the program now. In this program, if you pass a 2 argument, then you are calling this function. If you pass 1 argument, then you are calling the first function. This is called as function overloading. Run this application. Understood? Everybody, please reply. Hello, everyone. Clear? तो हमने और एक एग्जांपल किया था in C++. तो I'll show you the same thing again. लेकिन इसको देखो, और एक प्रोजेक्ट लेते हैं हम लोग. यहाँ पे राइट क्लिक, new and create a class. तो क्लास हम लोगों ने ग्रेटर नाम का एक क्लास लिया था कल. देन पब्लिक वॉइड ग्रेटर डेटा नाम का एक मेथड है, जहां पे मेरे पास 2 इंटीजर है. We have 2 integers, and then if n1 greater than n2, return n1, else n2. Public void greater data character ch1 comma character ch2. Okay, so n1 greater than n2, return n1. रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पे? इंटीजर. यहाँ का रिटर्न टाइप होगा कैरेक्टर. ओके, सो इफ ch1 is greater than ch2 based on the ASCII values, return ch1, else return ch2. ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा. यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर कर दिया, तो n1 n2, वैसे ही ch1 and ch2. दैट्स इट. ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी रन करेंगे यहाँ से. और if you want, I can take static method, so we can call directly, without object also. Without object, अगर इसको static ले लिया तो हम लोग बिना object के भी कॉल कर सकते हैं. static अगर ले लिया तो हम लोग इसको डायरेक्ट कॉल करेंगे. greater, और लिखो यहाँ पे क्लास का नाम greater डॉट, और मेथड ने greater data a, and यहाँ पे आएगा small a. तो ये ASCII को कंपेयर करेगा. इसका मतलब 65, इसका मतलब 97. तो 65 इज ग्रेटर देन 97, नो, तो ग्रेटर नंबर इज ch2. तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा SYSO ग्रेटर कैरेक्टर इज प्लस
ग्रेटर कैरेक्टर इज, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस ये कोड, ठीक है। ग्रेटर कैरेक्टर इज दिस, याद रखो इसको। सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर इंटीजर इज, ग्रेटर इंटीजर इज, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर डेटा, दैट इज दी 10, 20, the code and run this code. Character A and integer ये, क्योंकि small a is greater because 97, यहाँ पे integer is greater because of the 20, because of the 20. Understood everyone? ठीक है, तो देखो ये तो हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। यहाँ पे यू हैव सेम फंक्शन विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। तो जावा में एक नया कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं वेर आर्ग्स। इन जावा देयर इज अ न्यू कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज वेर आर्ग्स, ठीक है। तो वेर आर्ग्स का मतलब क्या होता है देखो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देयर आर सम डिप्लोमा स्टूडेंट्स एंड तुम्हें बोला गया कि कुछ इंटर्नशिप वगैरह ट्रेनिंग वगैरह, सॉरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है ना, एम आई राइट? ठीक है, सो बाद में आई विल कनेक्ट विथ योर ग्रुप, डोंट वरी, सेपरेटली। एनीबडी इज देयर फ्रॉम द, ओके हाँ ठीक है। तो देखो ये जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ ना, दिस ट्रेनिंग इज नॉट लाइक अ क्लासेस फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। एज आई टोल्ड यू, ये जो ट्रेनिंग तुम देखोगे, आई विल शो यू वन सेकेंड। यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि माई प्रोफाइल इज दैट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट कंसल्टिंग। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। तो तुम्हारे इसमें तुम लोग इसको ऐड कर सकते हो इफ यू विश टू ऐड। तो एक सेकेंड, ओके लिसन, तब तक यहाँ पे देखो कि अभी हमें क्या करना है कि ये जो प्रोग्राम था, राइट क्लिक किया, न्यू किया एंड टेक अ क्लास हियर, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे वेर आर्ग्स, वेर आर्ग्स डेमो, ओके। सो व्हाट इज दिस वेर आर्ग्स डेमो मेन? तो देखो अभी यहाँ पे क्या होता है कि क्लास डेमो है मेरे पास, जिसके पास अगर मैंने बोला मुझे 2 इंटीजर का एडिशन चाहिए, 3 इंटीजर का एडिशन चाहिए, 4 इंटीजर का एडिशन चाहिए, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, फंक्शन ओवरलोडिंग यूज करोगे, void add इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, ठीक है। सिमिलरली यू विल राइट void add इंटीजर a कॉमा इंटीजर b कॉमा इंटीजर c। Similarly, we can write here void add integer a, comma integer b, comma integer c, comma integer d. Am I right? अगर मुझे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 10 नंबर के लिए एडिशन चाहिए, so you can use a function overloading. Am I right? Yes or no? If you want addition of 2 numbers, 3 numbers, 4 number, 5 number, 6 number, so you can write this function how many times? 10 times. You can write this function how many times? 10 times. But यहाँ पे क्या बोला गया? Why you are writing the same code 10 times? Instead of writing the same code 10 times, just use only one code, add, और इसके अंदर तुम लिख दो integer, integer dot 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 a. Okay? अभी इस dot 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 का मतलब होता है here dot 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 means array. Means what? Array. Integer sum is equal to 0. For loop is there. Okay, यहाँ पे हमारे पास नया for loop भी है, बट पहले मैं ट्रेडिशनल for loop बनाता हूँ। I equal to 0, I less than a dot length and I plus plus. देखो, तो sum पहले 0 है मेरे पास, I 0 है, 0 less than है मेरा length से। What is the length? Length I don't know right now. Maybe 1, maybe 2, maybe 3, maybe 4. You can pass 0 number, you can pass 1 number, you can pass 2 number, you can pass 3 number. और तुम्हें सम चाहिए तो सम करो, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, सम प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे ए ऑफ आई, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, एंड हियर आई विल रिटर्न दिस सम। यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर कर दो, एक ही फंक्शन है, याद रखो। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ,
SYSO sum of two integer is प्लस क्या नाम है फंक्शन का add 10, 20 ठीक है। बट इसको कॉल करने के लिए यहाँ पे स्टैटिक लिखता हूं तो यू कैन कॉल डायरेक्टली डेमो डॉट दिस, ठीक है। आफ्टर दिस सम ऑफ थ्री इंटीजर इज डेमो डॉट 10, 20, 30, ओके। सो सम ऑफ फोर इंटीजर इज 10, 20, 30, 40. तो एक ही कोड है, there is only one code, but this code now you can use for 2 integer, 3 integer, 4 integer. देखो रन करो इसको, sum of 2 integer is 30, 3 का 60, 4 का 100. तो ये एक ही जो फंक्शन है ये दो इंटीजर के लिए भी काम में आएगा, 3 के लिए भी आएगा, 4 के लिए भी आएगा। तो इसको बोलते हैं डॉट डॉट डॉट, मतलब ये होता है एरे, दिस मीन्स एरे। तो इस एरे को तुम लोग कितने भी नंबर पास करो, 0 से लेके इंफिनिटी तक, नो प्रॉब्लम। So instead of taking the three different methods, you can take only one method, and this method will work for your numbers. Yes, रन टाइमला तुम्ही जेवढे नंबर पास करणार तेवढ्या नंबरसाठी तो तुम्हाला प्रिंट करून देणार. I 0 ला आला, 0 लेस दॅन 5 पेक्षा जर 5 नंबर दिले असेल तर 0 प्लस 0 चं सम, मग 1 मग 2 असं तुम्ही याला ऍड करा. ओके, पुढच्या वेळेस तुम्ही 2 नंबर दिले तर 2 नंबरचा ऍरे तयार होणार. तुम्ही यू कॅन प्रिंट दिस इफ यू वॉन्ट. Length of the array is plus a dot length. Compile this. Length of the array is 2 and sum is this. Length of the array is 3, sum is this. Length of the array is 4, sum is this. So this is called as the var variable, and this concept is called as the var args. This is called as a var args, variable argument. Variable argument, okay, means we can pass 0 integer or 1 integer or 2 integer or continuous. Understood everybody? But you can take only one varargs, and the varargs variable should be the last one. You cannot write this type of varargs method. Void display integer dot 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 a, integer dot 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 b. This is not valid, invalid. Invalid. varargs variable एकच असणार आहे, तो पण शेवटचा असणार आहे. मग याचा मीनिंग काय झाला? व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वन सेकंड, आय विल टाइप हियर. स्टॅटिक, एक सेकंड. ओके, void display. Yes, Prachi, you can pass, no problem, Prachi, because character is also a data type, right? Character dot 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 ch हा झाला कॅरेक्टरचा अरे. क्लिअर? इवन जर मी असं केलं तर बघ, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 1 integer compulsory, 1 integer, okay, and 0 character, or 1 integer or 1 character, or 1 integer or n number of character. ठीक है? तो इसका मतलब होता है एक इंटीजर कंपल्सरी है, कॅरेक्टर कितने भी हो सकते हैं. सगळ्यांना समजलं का? प्लीज रिप्लाय. म्हणजे त्यांनी कोडची साईज कमी केली. ट्राय टू अंडरस्टँड. दे आर लाईक ट्राइंग टू रिड्यूस द साईज ऑफ द कोड. काय पर्पज आहे बरं या कन्सेप्टचा? म्हणजे जर फंक्शन ओव्हरलोडिंग दिलं तर तुम्हाला 4-4, 5-5 वेळेस मेथड लिहावं लागायची. मग त्यापेक्षा एकच मेथड लिहा आणि त्यामध्ये तुम्ही मल्टिपल व्हॅल्यू पास करा. याला आपण काय म्हणतो? फंक्शन ओव्हरलोडिंग. याला आपण काय म्हणतो? फंक्शन ओव्हरलोडिंग. ओके, रिमेंबर दिस.
Okay, this is called as the function overloading. Okay. So this concept is called as the whereas. In the whereas concept, we are using a same function. We are using a same function more than once. We are using a same function more than once for the n number of argument. For one argument, two argument, zero argument. Okay, but only same type, not to the different type. Only the same type. Okay. So this concept is called as a whereas and variable argument. हे बघ इथे लिहिलंय मी. ठीक आहे श्रुती. ते डॉट 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 म्हणजे ऍरे श्रुती. आणि त्याला आपण ऍरेला आपण किती पण व्हॅल्यू पास करू शकतो. 1 2 3 4 किती पण व्हॅल्यू पास करा. आणि स्फूर्ती जसं बोललं तर डायनेमिकली ते इनिशियलाइज करणार. नाही मी सांगितलं ते. हे बघ इथे लिहिलं ना मी एवढ्यात. हे बघ आदित्य, 2 whereas are not allowed. ठीक है. ठीक आहे. सो आतापर्यंत ह्या बॅच मध्ये आपण काय काय बघितलंय. काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं पीओसी म्हणजे काय, टेबल ऑफ कंटेंट्स. सो या सगळ्या कंटेंट्सवर तुम्हाला काय करायचंय, यू हॅव टू राईट द नोट्स. ठीक आहे. यू हॅव टू राईट द नोट्स. हे बघा इथे लिहिलं होतं मी. सी व्हॉट इज जावा फीचर, जेव्हीएम, बाईट कोड अँड ऑल दिस टॉपिक. ठीक आहे. देन उप्स कन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, ॲरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्झाम्पल्स आपण बघितले होते. नाव आय टोल्ड यू स्टॅटिक कन्सेप्ट, फंक्शन ओव्हरलोडिंग, वॅराक्स हे आपण बघितलं इथपर्यंत. ओके. नाव देन आय विल टेल यू दिस कन्सेप्ट. हे नंतर सांगेल मी तुम्हाला. पण तुम्हाला सगळ्यांना ह्या विकेंडला या सगळ्या कन्सेप्टवर काय करायचंय, इथपर्यंत प्रत्येक कन्सेप्टवर नोट्स लिहायच्या आहेत. काय लिहायच्या आहेत? नोट्स. या सगळ्या कन्सेप्टवर तुम्हाला नोट्स लिहायच्या आहेत. स्टॅटिक कन्सेप्ट म्हणजे स्टॅटिक व्हेरिएबल, okay, static method and static block and static import. Okay, and now I told you function overloading and whereas concept, this keyword. Okay, tomorrow I will tell you the wrapper classes. कोड मध्ये इंट वाले किती वेरिएबल्स अलाउड आहेत. म्हणजे काय म्हणायचे तुला इथे, फॉर एक्झाम्पल ह्या एका याला किती इंटिजर पास करायचे असं का नम्रता? याला किती इंटिजर पास करायचे असं विचारते का तू? अच्छा, म्हणजे असं किती वेळा लिहू शकतो सेम. गरज काय पण त्याची, जर याच्याकडनं सगळ्यांचं काम होणार आहे, याला तू 1 आर्ग्युमेंट पास कर, 2 पास कर, 3 पास कर, 100 पास कर. ठीक आहे. किती पण आर्ग्युमेंट तू याला पास कर, मग दुसरं मी कशाला लिहिणार ना त्याच टाईपसाठी. बोल असं म्हणते ना तू. म्हणजे हियर यू मीन टू से दॅट सपोज आय विल टेक द टेस्ट अनदर whereas मेथड. ओके ना. मेथड मस्ट रिटर्न ऍटलीस्ट इंटिजर. ठीक आहे, रिटर्न करू दे. हा, पण मला सांग आता तू जे म्हणते याच्यात मॅक्स आणि मिन तुला फाइंड आउट करायचंय, हे तू याच्यामध्ये पण करू शकते. तू जर म्हणते मला सम पण करायची, अच्छा मग तू इथे तुला अच्छा मग तुला तर इकडे त्यासाठी मॅक्स मिन साठी मग तसं काही लिमिटेशन नाहीये. तू किती पण वेळेस लिहू शकते हे. इथे ऍड लिहिलं, इथे टेस्ट लिहिलं, इथे फक्त नावं चेंज कर मग दरवेळेस. क्लिअर. त्याचं काही लिमिटेशन नाहीये. यू कॅन राईट दिस मेथड एन नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक आहे. ओके. सो एव्हरीबडी प्लीज रिमेंबर, आतापर्यंत आपण इथपर्यंत आलोय ह्या बॅच मध्ये. आणि नाव टुमॉरो आय विल टेल यू दिस wrapper classes. Then I will take some applications. Okay, here I will take some applications, employee management applications, अशी काही applications with the multiple classes I will take, and from here onwards inheritance. Okay, then we have here object class,
then abstract class, interface, polymorphism, okay, multiple interface, and JDK 8 interface. So या काही कन्सेप्ट पुढे स्टार्ट होतील, अजून याला वेळ आहे थोडा. सुपर कीवर्ड, फायनल कीवर्ड, ओके. सो आधीच्या बॅचचं पण हे रिपीट होऊन जाईल, जर तुम्हाला रिपीट करायचं असेल तर. ज्यांचं आधी झालं हे एकदा, हा टॉपिक महत्वाचा आहे, बिकॉज मी ज्या गोष्टी तुम्हाला सांगतोय त्या सगळे फार इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत. यू कॅन गो फॉर एनी इंटरव्ह्यू, दिस टॉपिक्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑल दिस टॉपिक्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. सो ॲज आय टोल्ड यू ना, आता ज्या लोकांचं प्लेसमेंट झाले ना, त्यांचं मी एक सेशन अरेंज करणार आहे. मे बी सॅटर्डेला करतो किंवा उद्या वगैरे जमेल तर करेल. तर तुम्ही त्यांना विचारा डाऊट, तुम्हाला सांगतील ते, त्यांना काय काय विचारलं. म्हणजे जरी 12 लाख जरी पॅकेज मिळतंय तरी पण काय महत्वाचं आहे, बेसिक फंडामेंटल्स, द बेसिक थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. आणि याच्याने पुढचं काम सोपं होतं. अंडरस्टूड एव्हरीबडी. सो डिप्लोमा स्टुडंट, बेसिकली तुम्हाला जे कन्फ्युजन असेल तुमच्यासाठी सांगतोय मी, तर तुम्ही कॉलेजमध्ये सांगू शकताय की वी आर डुईंग अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. ओके, वी आर डुईंग अ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. ठीक आहे, फाइन. So don't worry, even I'll give you the, once you complete the project, we'll give you the certificate of that also. Okay. Chalo then, today I will stop here, and tomorrow we'll continue with this concept, wrapper classes, and tomorrow we'll complete with the wrapper classes. Then this weekend you have to write down the notes on each and every topic. मग आपण पुढच्या वीकला काही रिअल टाइम ऍप्लिकेशन्स बनवू, and then we'll start with this thing. Okay. Fine. Chalo then, we'll stop here and bye bye.